Hello world, I am Bhavik Motiwala and welcome to Orange Hive. Today we are going to see 5 ways of work from home smartly. So let's dive in. कोरोना वायरस ने वर्क एनवायरनमेंट को कंप्लीटली चेंज कर दिया है. आई मीन वी ऑल आर कंप्लेनिंग राइट. जो काम हम लोग ऑफिस में 8 to 10 आवर्स में करते थे, आर वर्क आवर्स हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड इन वर्क फ्रॉम होम. वी आर ऑल वर्किंग फॉर अबाउट 12 to 14 आवर्स. और तो और a lot of companies are now planning to adopt this work from home permanently. The question is, why are companies doing so? अरे कहना क्या चाहते हो? Just think about it. The entire economy is in a recessionary phase. Recessions है, इसके लिए company is not able to do business. Businesses नहीं हो रहे, so companies are not able to generate revenues. Revenues नहीं आ रहे हैं, that means they are not able to generate profits. And profits नहीं है, तो what is the next best thing the company can do to survive? Reduce costs. On a daily basis, कंपनीज को एक ऑपरेटिंग कॉस्ट्स मैनेज करना पड़ता है. ये ऑपरेटिंग कॉस्ट्स इज नथिंग बट रेंट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज, यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सप्लाईज, ये सब मिलके ऑपरेटिंग कॉस्ट्स होते हैं. An article from Economic Times indicates that about 50 to 70% of this operating cost can actually be reduced if we adopt this work from home model. So long story short, boss, ये work from home इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है. So what is it that we can do about it? How can we make work from home more effective, work smartly, and make your bosses happy? Sir, report 1. Report 2. But sir, I know कि बहुत टेम्पटिंग होता है ना, वी जस्ट ले डाउन ऑन आवर बेड्स और ऑन सोफा विथ लैपटॉप प्रॉप्ड अप. But research indicates that actually laying down on your beds or on sofa reduces your productivity. Let me explain. Our brains work in a very funny way. एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन को फोकस करने में बहुत हेल्प करता है. सो बेसिकली व्हेन वी आर सिटिंग अराउंड ब्लैंकेट्स, पिलोज ऑन अ बेड, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग आवर ब्रेन रियलाइज कि मुझे अभी रेस्ट करना है, आई हैव टू रिलैक्स. साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस क्लासिकल कंडीशनिंग, योर ब्रेन इज ट्राइंग टू गो इन दैट रिलैक्स और रेस्ट मोड, बट एक्चुअली यू आर आस्किंग योर ब्रेन टू मे बी राइट अ मेल or submit an assignment. So your brain actually gets confused whether am I supposed to rest or am I supposed to work. This is exactly the reason why lot of people these days are complaining कि boss work from home की वजह से I have started getting sleepless nights. Now the question is what to do about it. ट्राई कीजिए कि एक डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस घर के अंदर हो. आई नो कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ हम लोग यूजुअली जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं और वी आर स्टेइंग विद आवर रूममेट्स, द हाउसेज आर स्मॉलर. ऐसे सिचुएशन में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ डेडिकेटेड रूम जहाँ पे एक ऑफिस जैसा हम लोग ट्रीट कर सके. बट वॉट वी कैन डू इज, मे बी वी कैन हैव सम मैट्रेस और मे बी वी कैन हैव अ फ्लोर मैट. वर्स्ट केस सिनेरियो, वी कैन हैव अ फोल्डेबल टेबल, समथिंग लाइक दिस, which can act as a dedicated office space. Try and do majority of your work in these particular spaces itself. क्या होता है कि it trains your brain, classical conditioning, it trains your brain again कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, I am supposed to focus and I am supposed to deliver something. That's tip number 1. Let's face it guys, with great comfort comes great responsibilities. वर्क फ्रॉम होम एक तरीके से ईज प्रोवाइड करता है, तो दूसरी तरीके से घर के थोड़े काम भी करने पड़ते हैं. हाँ. This is completely acceptable. We have to do a little bit of our household activities. But most important thing is constantly switching between household activities and work activities actually results in the reduction in productivity.
That is why it is required that you speak to your family members or friends or roommates that for specific hours during the day आपको वो disturb ना करे, because working effectively and to increase productivity requires certain amount of time in isolation. Let me explain कि हम लोग उसको justify कैसे कर सकते हैं. अगर आप ये सेम जॉब, सेम डेजिग्नेशन पे, सेम सैलरी पे, सेम कंपनी में अगर ऑफिस एनवायरनमेंट में करते तो वुड दे डिस्टर्ब यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? तो अगर अभी सेम चीज हम घर पे कर रहे हैं तो व्हाई इज इट दैट इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड? यू कैन जस्टिफाई दिस टू देम एंड आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड. सो दैट्स टिप नंबर 2. नंबर 3, ड्रेस अप. मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग दिस. अरे यार, वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा फायदा तो वर्किंग इन पाइजामाज एंड नाइट ड्रेस एंड बॉक्सर्स ही होता है ना. रिसर्च सेज दैट जस्ट लाइक एनवायरनमेंट जो एक क्लासिकल कंडीशनिंग क्रिएट करता है हमारे ब्रेन के लिए, सेम थिंग अप्लाइज टू आवर अटायर्स टू. सपोज इफ यू आर वेयरिंग अ परफेक्ट अटायर, ब्रशिंग योर टीथ, मे बी टेकिंग अ शावर और हैविंग योर ब्रेकफास्ट, गेटिंग इनटू द जोन, इट हेल्प्स योर ब्रेन एक्टिवेट दोज फोकस न्यूरॉन्स. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी आर प्लानिंग टू अटेंड सम मैरिज या फिर कोई फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे हैं, तो वी टेंड टू वेयर दोज ट्रेडिशनल एथनिक क्लोथ्स. ऐसा क्यों? वो फील आती है, राइट? दैट इज एग्जैक्टली विच अप्लाइज ओवर ईयर टू. बट सम पीपल माइट आर्ग्यू कि हमारे ऑफिस में तो पहले से फॉर्मल अटायर तो है ही नहीं, देन व्हाई इज इट दैट आई शुड वेयर अ फॉर्मल अटायर नाउ? I completely agree. You can wear whatever you feel is comfortable with you and something which you would prefer going to the office wearing that, वो आप पहन के काम पे लग सकते हो. I'm sure that is not going to be your pajamas or boxers, right? Tip number 4, taking regular breaks. A research from Stanford actually indicated that if our brain is allowed to take 10 to 15 minutes of break after 60 to 90 minutes of continuous activity, it helps it improve the productivity. वैसे देखा जाए तो हम लोग ऑफिस में भी ऐसे मेंटल ब्रेक्स लेते हैं. थिंक ऑफ इट, 1-1.5 घंटा काम करने के बाद मे बी वी गो टू अ कॉफी मशीन, वी टॉक टू अ कलीग, वी गॉसिप अबाउट सम बॉसेस, वी गॉसिप अबाउट सम कलीग्स. These are all mental breaks. So why not implement such mental breaks? Of course not gossiping, but we can implement such mental breaks during our work from home. Maybe in case if you are tired after 60 to 90 minutes of your continuous work, हम लोग एक बुक पढ़ सकते हैं for about 10 to 15 minutes. Maybe we can go for a stretch, go for a walk, or maybe take a power nap. Feel free to take a 10 to 15 minute breather mental break after every 60 to 90 minutes of activity. But make sure कि ये 10 से 15 मिनट से ज़्यादा extend ना हो जाए. Number 5, keeping in touch with your colleagues. गाइज बिलीव इट और नॉट, पर जो ऑफिस में हम लोग का कोलैबोरेशन होता है, सोशलाइजेशन होता है, इट एक्चुअली हेल्प्स अस रिलीविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. जब हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में देयर आर लॉट ऑफ कलीग्स हु आर फेसिंग द सेम सिचुएशंस लाइक अस, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि आई एम नॉट द सिंगल पर्सन सफरिंग दिस, राइट? द प्रॉब्लम विथ वर्क फ्रॉम होम इज दैट इट वैनिशेज एंटायर अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशलाइजिंग विथ योर कलीग्स. हम लोग को पता ही नहीं चलता कि जो वर्क फ्रॉम होम प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, इज इट द प्रॉब्लम विच माई कलीग इज ऑल्सो फेसिंग? मुझे समझ में ही नहीं आता. सो दैट इज वाई वंस इन अ वाइल कनेक्ट विथ देम, talk to them about your personal life, ask them about their personal professional life, stay connected. Believe me guys, this helps reduce a lot of stress and actually gives us an encouragement sometimes to try and do something better than your colleague, right? आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. ऑल्सो इफ यू हैव सम ट्रिक्स और टिप्स, मे बी वी कैन यूज देम, तो प्लीज मेंशन इट इन योर कमेंट्स. टिल देन,
Happy work from home. Bye.